ठीक है, पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया था हमने, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टेम्परेचर अगर हायर रहता है तो व्हाट टेक्स प्लेस, एलिमिनेशन। इज दैट ओके? अच्छा, यहां पर एक डिस्क्लेमर और भी, अगर टेम्परेचर बहुत हाई है और कोई भी मीडियम प्रोवाइडेड नहीं है, गैसियस मीडियम, ठीक है ना, इसका मतलब होता है द रिएक्शन इज गोइंग टुवर्ड्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। वेरी हाई टेम्परेचर and gaseous medium will take your process towards free radical reaction। ठीक है, are we getting this point? हेलो, सारे लोगों को सुनाई यस। दे रहा है? मुझे एक दो क्वेश्चंस थे। बोलो। सर मैंने थोड़े एक मिनट। भेज रहे हो? सर नहीं, कोई क्वेश्चन मतलब आपने जो कल पढ़ा था उसके रिलेटेड ही एक दो चीजें नहीं समझी थी वही। हाँ बोलो ना। Gaseous medium। सर तो जो अल्कोहलिक KOH था वो एलिमिनेशन देगा। हाँ, सर वो रिएजेंट्स वाले में, मतलब रिएजेंट्स नहीं, वो थर्ड पॉइंट जो भी था। ये टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग दूसरा पॉइंट जो था वो सबस्ट्रेट रिलेटेड था। हाँ सर, तो वहां पे मुझे लाइक अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अरे रुक जाओ, बेस में आता हूँ फिर डिस्कस करें। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चरल पैटर्न्स होते हैं जो एलिमिनेशन को फेवर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होएगा दैट इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा स्टेबलाइज बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव रेजोनेंस, दैट कुड बी अ थिंग, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह, या किसी एक प्रोसेस के थ्रू उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही होगी, एंड देयरफॉर दैट पैटर्न takes the process towards or the end products towards elimination rather than substitution। फॉर एग्जाम्पल, यहां से एक्स का हटना और पाई बॉन्ड का फॉर्म होना, जनरली पाई बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इन जनरल ये होता है कि सिग्मा बॉन्ड के बदले पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इज नेवर प्रेफर्ड अंटिल अनलेस यू हैव हाई टेम्परेचर। बट कुछ स्ट्रक्चरल पैटर्न, जैसे यहाँ पर अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी 30-40 जूल की, किलो कैलोरी की, 30 किलो 40 किलो कैलोरी 39 किलो कैलोरी की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का डिफरेंस जो होता है वो कभी भी 40 किलो कैलोरी के आसपास नहीं होता है, 20-25 बहुत रहेगा तो रहेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर इस सिनारियो में स्पेशल पैटर्न जो है दैट टेक्स दिस प्रोसेस टुवर्ड्स ये takes this process towards elimination rather than substitution। सिमिलरली यहां पर 3 डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री, और उसके बाद एलिमिनेशन 3 डिग्री से एलिमिनेशन हो रहा है। 1 डिग्री वाला सिग्मा के कंपैरिजन में एक्सेसिव हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये भी स्टेबल होता है, बेटर स्टेबलाइज्ड होता है, एंड देयरफॉर this type of patterns are also going to take it towards elimination।
सिमिलरली यहां बताया था मैंने 4 कार्बन से चौथे कार्बन पर एक्स है, मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो एक्स सब्स्टिट्यूट हो सकता है या फिर एक्स एलिमिनेट हो सकता है। यहाँ पर प्रेफरेंशियली एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन आ जाएगा। ये डाइन है, कॉन्जुगेटेड डाइन, एंड देयरफॉर इट विल फॉर्म दिस प्रोडक्ट। However, the same thing is not true for this one, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड आने की वजह से किसी भी तरह का एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रहा है। इट्स जनरल थिंग, देयरफॉर यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली हमको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। The third point which we discussed yesterday was nature of reagent। ठीक है, नेचर ऑफ रिएजेंट के टाइम पर मैंने ये बताया कार्बोकटायन एक बार फॉर्म हो गया तो H प्लस जो रिमूव होना है उसकी एसिडिटी हर टाइम पे बहुत अच्छी नहीं होती। ठीक है, वो जनरली काफी वीक एसिड होता है ऑल द टाइम इन अ कार्बोकटायन, एंड देयरफॉर we require a strong base to pull it out, that is to perform the elimination। H plus को निकालने के लिए we always require a strong base। Why? Because acidity is not very high। Again, the second thing is most of the strong bases are strong nucleophiles। However, in some cases there are some of the bases which are good bases but not that great nucleophiles। ठीक है, there are some good bases that are not so good nucleophiles। The presence of such bases, ठीक है, such strong bases which are not nucleophiles is definitely going to take your process towards elimination rather than substitution। Is that okay? अब इसमें मैंने एग्जांपल दिया था सम ऑफ द गुड बेसिस बट बैड न्यूक्लियोफाइल में, ये 4 एग्जांपल दिए थे, 5 एग्जांपल, सॉरी 4 एग्जांपल। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, टोसाइलेट, मिसाइलेट, बाइसल्फेट, एंड एक छोड़ दिया था ट्राइफियाट, एक छूट गया था, छोड़ नहीं दिया था। ट्राइफ्लेट्स, ट्राइफ्लेट्स जो थे वो छूट गए थे मेरे से गलती से। ठीक है, तो उसको भी ऐड ही कर देते हैं हम लोग। इट्स O माइनस S डबल बॉन्ड O CF3। दिस इज कॉल्ड ट्राइफ्लैट्स। ठीक है, this is another thing which has which is good base but not a good nucleophile। Making sense? So अभी हमको क्या मिल गया, 5 नाम मिल गए हैं जो कि अच्छे बेसेस हैं बट दे आर नॉट गुड न्यूक्लियोफाइल्स। मेकिंग सेंस? गलत तो नहीं? Is a good living group।
अच्छा, और या बेसिकली यहीं पे फिर मैंने ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी कि अल्कोहलिक केओएच जो होता है, अल्कोहलिक केओएच और एक्वस केओएच या एक्वस एनएओएच, ठीक है, इनके अंदर में टेंडेंसी क्या होती है या किस तरह से ये ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेशन हैपेंस टू बी समथिंग लाइक दिस। एक्वस केओएच के साथ मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्वस केओएच या एनओएच में आई गेट OH माइनस एक्वस, ठीक है। और अल्कोहलिक केओएच में जनरली ये अल्कोहलिक जो होता है ये एमईओएच के साथ केओएच रहता है, या फिर ETOH के साथ एथॉक्साइड इथेनॉल के साथ KOH रहता है। दोनों ही केस में इट इज ऑफ बैकवर्ड बूस्ट, बैकवर्ड बूस्ट एसिड बेस इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉर्मिंग MEO माइनस प्लस K प्लस प्लस H2O, और ये भी बैकवर्ड बूस्ट रिएक्शन होता है ETO माइनस प्लस K प्लस प्लस H2O। अब ये H2O जो होता है ये बाकी का जो इथेनॉल या मेथेनॉल है इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने में यूज होता है। K प्लस जो होता है ये जो है ये सिर्फ स्पेक्टेटर आयंस का काम करता है। स्पेक्टेटर आयन क्यों? सॉल्वेट होने के बाद स्पेक्टेटर, सॉल्वेट आयन फॉर्म करने के बाद स्पेक्टेटर सॉल्वेटेड आयन, ठीक है। सॉल्वेट होने के बाद इनके अंदर कोई भी टेंडेंसी नहीं रहती है रिएक्टिविटी की। दे आर वेरी रिएक्टिव व्हेन दे आर इन एटॉमिक स्टेट, but once they form ions and get solvated they have no reactivity or no intent to be bound to anything, ठीक है। स्पेक्टेटर आयन इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ नो इंटेंट ऑफ इंटरेक्शन इन सॉल्वेटेड फेज। अल्कोहल्स के अंदर रहेगा तो ये सॉल्वेट हो गया रहेगा। अब हमारे पास जो स्पीसीज बचती है वो सिर्फ ये स्पीसीज बचती है, और इसका रिएक्शन हो रहा है तो ये स्पीसीज बचती है। नाउ दीज टू आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है, एज दे आर conjugate base of strong acid. Is that okay? So MEOH and KOH or ETOH, KOH, or even with NaOH and MEOH or ETOH, NaOH, is that okay? Is an indicator that we have these species in the reaction and their formation itself, ठीक है, is sufficient enough to pull a proton। कहीं पर भी जुड़ा रहेगा एस तो उसको ये पुल कर लेंगे और फिर यहाँ पर बैकवर्ड आ जाएंगे। इज दैट ओके?
Yes. ओके, सेम इज द केस विद टर्ड ब्यूटॉक्साइड। टर्ड ब्यूटॉक्साइड के साथ भी ऐसा ही होता है। टी BuOH plus KOH is going to create third BuO minus plus K plus solvated and H2O. This happens to be a good acid. अब एक generic understanding, if I have anything like this, with different reagents, what can happen is what I am going to state. Given all conditions, other conditions same, इसके साथ क्या होगा is what I am trying to explain. ठीक है? For example, if I am going to take H2O, H2O कैसा है entity? Is it a good base? Is it a weak base? Is it a good nucleophile? A weak nucleophile? हेलो, सर अभी हम लोग ये किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू, अच्छा उसका ही चालू है। हाँ, with respect to the reagent present or the रिएजेंट, हाँ। solvent present. हाँ, H2O कैसा है? सर बट उसके पहले मुझे ये पूछना था हाँ बोलो। कि हम लोग जब स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात कर रहे थे एज रिएक्टेंट, तो अभी हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन होगा क्या? नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, यस। तो फिर हम लोग जो ये अल्कोहलिक केओएच ले रहे थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था। अल्कोहलिक KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, यस। फिर उससे एलिमिनेशन हो रहा था बट, हाँ, उससे एलिमिनेशन हो रहा है। तो वो क्योंकि वो बुरा न्यूक्लियोफाइल है इसीलिए, क्या क्या फिर? सॉरी, फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो। आप बोल रहे हो कि ये आ, आप ले रहे हो, तो दिस शुड बी गिविंग अस व्हाट, नॉट दिस, बेसिकली ये वाला, राइट? हाँ ये वाला। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है? दैट वाज योर क्वेश्चन, राइट? हाँ, नहीं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन करेगा। ये सब्स्टिट्यूशन भी देता है, नो डाउट अबाउट दैट। बट यहाँ पे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्यों देता है ये भी डिस्कस करेंगे इन तीनों में, ठीक है? ये जो है ये प्रेफरेंशियली ओनली सब ओनली एलिमिनेशन देगा, या ऐसे बोलते हैं कि एलिमिनेशन अप टू 95%। ठीक है? इनके साथ में क्या होगा? इफ दे आर बीइंग यूज्ड, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन दोनों चलेगा। ठीक है? अगर जनरली डेल्टा यूज करेंगे हम लोग तो इट विल गो टुवर्ड्स एलिमिनेशन। डेल्टा नहीं यूज कर रहे हैं, नो डेल्टा, दैट विल गो टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ रही है?
MEO माइनस ETO माइनस एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों देते हैं। अगर हम डेल्टा यूज कर रहे हैं तो एलिमिनेशन की तरफ प्रोसेस जाता है, अगर नहीं तो फिर सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाता है। ठीक है सर, समझ। ब्यूटॉक्साइड कुछ भी यूज ना करे, मतलब हीट ना भी यूज करे, तब भी इसको एलिमिनेशन की तरफ ही लेकर के जाए। क्लियर या डाउट? अच्छा, अभी एक चीज और, ये चीजें सारी जो है वो थोड़े थोड़े लाइक एक एक करके आ रही है और एक एक करके क्लियर हुई। ठीक है, और इट विल टेक टाइम, वी हैव टू टेक मल्टीपल एग्जाम। यहाँ के केस में, in case of H2O, it's always going to be a substitution reaction. ठीक है, H2O with delta, this is also going to take us towards substitution only, no changes. OH minus है aqueous रहेगा obviously, this is still going to be SN. Are we getting this point? OH minus with delta अगर हम लेंगे, ठीक है, aqueous with delta, this is still going to be SN. और ये किस टाइप का है? 1 डिग्री सबस्ट्रेट। और ETO माइनस और MEO माइनस 1 डिग्री के साथ यूज कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू गिव मी SN, एज वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ETO माइनस और MEO माइनस विथ डेल्टा 1 डिग्री के साथ स्टिल गिव्स SN। ठीक है, और इसके साथ साथ एक्चुअली इसके ऊपर लिखना चाहिए, there is something called ACO minus। AC क्या होता है? With delta, it still gives SN. This will MEO minus, ETO minus or MEO minus with delta is going to give me, still going to give me SN. Wait, sorry, यहां से एलिमिनेशन हो जाता है विद डेल्टा। अगर इसको यूज करते हैं तो दिस गिव्स एलिमिनेशन। टॉर्ट ब्यूटॉक्साइड TBuO minus, even without heat gives elimination. With heat, the major product will be more tilted towards elimination. With heat, it is going to be more tilted towards elimination. The next one is, there is one more thing called LDA. LDA. LDA का फुल फॉर्म होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। LDA. Its shape is something like this: nitrogen connected to two isopropyls with a lone pair. ठीक है, sorry, with an extra lone pair, making it a highly acidic, highly basic Li plus. This is called lithium diisopropyl amide, and this is a very good base. It gives elimination.
LDA, ये 1 डिग्री में भी एलिमिनेशन दे रहे हैं. इज दैट ओके? नोट दिस इज 1 डिग्री and we are getting elimination. Now we are going to move into another page, or maybe here only. Now I am going to put a vertical line over here. I'm going to change the scenario a bit. I'm going to take a 2 degree substrate. ठीक है? CH3 CHBr and CH3. With this, again I am going to use multiple things. हेलो सर. हाँ बोलो. सर मैं लीव करूँ चलेगा? हाँ लीव करो चलेगा. With this, I'm still going to use multiple reagents. This time, the things which I'm going to get is as follows. The reaction which I'm going to get is, let me take H2O. This is going to give me Sn. H2O with delta, till Sn. H2O with delta, till Sn. एक काम करें, हर जगह कॉमा डाल देते हैं, कॉमा डेल्टा. ठीक है. Okay. Cosmetic changes. Okay. Next one, OH minus SN. इसके बाद OH minus and delta. It is still going to give us SN. ACO minus delta. ACO minus and delta. It is still going to be SN. MEO normal or ETO normal. MEO minus or ETO minus normal. This is going to give us SN. However, अच्छा नहीं, इसमें SN और E दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल के रहते. The moment we use MEO or ETO with delta, MEO or ETO minus with delta, and we start getting elimination as major. We tert butoxide with or without, दोनों cases में it is going to give elimination. Tert BuO minus, and I'm going to have elimination. Tert BuO minus, delta elimination, and last thing is LDA, and we have elimination. LDA के साथ हीट डालेंगे तो क्या होगा?
elimination. Is that okay? Yes, sir. और टर्सरी के साथ देखते हैं क्या हो रहा है. We'll go with we'll try to see about tertiary as well. Short वाले में, so basically I have CH3 C CH3 CH3 Br, and over here I am trying to put multiple things again in order to see what each of them are going to give. तो बेसिकली अब पूरी प्रोफाइल लिखने के बजाय H2O with डेल्टा देख लेते हैं. अगर H2O with डेल्टा अगर SN दे रहा है तो H2O भी SN देगा. Any doubt? Nice, sir. ओके. OH माइनस जो होता है वो SN देता है यहाँ पर, बट OH माइनस विथ डेल्टा जो है वो एलिमिनेशन देता है. कौन कौन है? OH माइनस विथ डेल्टा एलिमिनेशन देता है. OH माइनस के बाद MEO माइनस और ETO माइनस they are also going to give elimination. This one with delta elimination, MEO minus or ETO minus with delta again elimination. Third butoxide with or without दोनों केसेस में elimination. TBUO minus elimination. यहाँ पर ACO माइनस डेल्टा भी जो है वो क्या करेगा, एलिमिनेशन देगा. यहाँ एक सेकेंड रुक जाओ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देने दो. तो इसमें करना पड़ेगा मुझे. यहाँ पर ACO माइनस जो होता है, ACO माइनस, दिस गिव्स सब्स्टिट्यूशन. ACO माइनस डेल्टा या फिर OH minus delta. This will take it things towards AC minus जो है, this is going to give substitution only. फिर ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा. इसका अभी सिर्फ मैं दे नहीं रहा हूँ. I'll check and let you know. guys. SN होगा या एलिमिनेशन की तरफ जाए या दोनों होगा, अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ. I'll just have a check कि ये किस तरफ लेके जा. OH minus and delta से we start having elimination as major product. OH minus के बाद we can have MEO and इसके आगे के सारे जो होंगे
MEO minus or ETO minus, we are going to have elimination dot butoxide elimination dot UO minus, we will have elimination with or without delta. LDA we are going to have elimination. LDA elimination. So that's a detailed profile analysis with depending upon 1 degree, 2 degree, 3 degree, 1 degree, 2 degree, 3 degree. इसमें टेम्परेचर क्या रोल प्ले कर सकता है, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन. ठीक है. सिमिलरली अभी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो गया. इसके बाद अलाइलिक और बेंजाइलिक भी हम लोग देख लेंगे. सो वी कैन बी वेरी मच श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ठीक है. हाँ सर. देखिए एनिलीन के ऊपर अगर HNO3 सॉरी HNO2 in presence of any halide like HCl, HBr और HI अगर हम डालते हैं, ठीक है, तो what happens is the first step of reaction is this HNO2 plus HCl reacts together. कैसे रिएक्ट करता है? बेसिकली ये इस तरीके से रिएक्ट करता है. HNO2 is N double bond O and OH and lone pair plus HCl. So this H will go to this O. It will form N double bond O lone pair OH2 plus with a single lone pair and plus Cl minus plus Cl minus. Now this becomes a good living group. This takes away the double bonded electron pair with itself and leaves nitrogen, which happens to be a electron deficient entity with a vacant orbital. अब ये highly reactive हो जाएगा. Now what it will do? It will come and interact with aniline का lone pair. So we have aniline जिसके पास अपना एक लोन पेयर है. इस लोन पेयर के साथ ये N डबल बॉन्ड O स्पीसीज जो है this starts interacting. Now इस इंटरेक्शन से हमारा ये एंटिटी बनता है NH लोन पेयर गया तो पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा. N डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर. ठीक है. इज दैट ओके? अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, IMPT. IMPT का फुल फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन
transfer. Is that okay? Basically a acid base reaction. So this H plus will then migrate, leaving behind its lone pair. It will get attracted towards this oxy and it forms NH with lone pair, N double bond O with H attached and one electron pair and a positive charge. क्यों? क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया. किसको दे दिया? H को दे दिया. Is that okay? Yes. Now, under this scenario, ये entity, ये bonded pair फिर से ऑक्सीजन पे जाता है, बॉन्ड ओपन हुआ, यहाँ पर एक लोन पेयर था, अब यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल भी आ जाएगा. Is that okay? तो एक सेकंड में बताता हूँ. लोन पेयर तो बॉन्ड एक बॉन्ड चार बॉन्ड एच दिया. हाँ ठीक. अगला जो होगा काम वो होता है ये नाइट्रोजन H lone pair N with lone pair and a vacant orbital single bond OH. ठीक है, इसके पास दो लोन पेयर है. अब the next thing will be this electron pair is donated into this to form a double bond. Is that okay? So it forms N double bond N lone pair H with plus charge single bond OH two lone pairs. अब इस सिनारियो में what will happen? This will try to pull its electron, bonded electron. This will donate simultaneously its electron to this. And then we have the next step of the reaction where there is another set of IMPT which is taking place. Intramolecular proton transfer, IMPT. And we have formation of this particular entity N double bond lone pair N O H एक और H with lone pair and positive charge. Is that okay? अब क्या होगा? ये जो है ऑक्सीजन ये बॉन्डेड पेयर को लेकर के चला जाएगा. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं हम लोगों को? And we will Yes. have a
N lone pair, double bond, N lone pair with a vacant orbital. ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर, नहीं ऐसे क्या है, चेंज खाली कर देते हैं, लोन पेयर को ऊपर से नीचे ला देते हैं, फिर migrations will be much easier to understand. There will be H plus H, sorry, H2O. H2O will depart. यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल आ गया. अब अगला स्टेप क्या होगा? This is going to form a resonance stabilized structure, back bonding. ठीक है, अब लोन पेयर के डोनेशन की वजह से N पर चार्ज कैसा आ जाएगा? This will have a positive charge. Is that okay? और ये एंटिटी, ये वाली एंटिटी, यहाँ पर जो Cl माइनस बनी हुई थी, यहाँ पर Cl माइनस बना था, इस Cl माइनस के साथ आयन इलेक्ट्रॉन पेयर बनाता है, सॉरी, आयन आयन पेयर, आयन आयन पेयरिंग. This is called diazonium, diazonium salt. Is that okay? ये बात समझ में आई? खैर ये बात ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं, ये बता दिया मैंने. इस तरह के ट्रांसफर्स और कई एक सारे हमको देखने को मिलेंगे. नेवरदलेस यहाँ पर फिलहाल ये हो रहा है, OH माइनस N2 को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके फिनॉल बना देता है. बात समझ में आ रही है उमंग? हाँ सर हाँ. और कुछ डाउट है इसमें? सर अभी तो नहीं. ठीक है. Let me know if you have any. Now I'll discuss the next part of this. That is, ये वाला पार्ट तो अलग से हो गया. जस्ट ये हमारा साइड नॉलेज है. अच्छा, लेट मी डू वन थिंग. इसको मैं साइड में करता हूं. यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर वो ऑटोमेटिकली. यस, page 57. I can look at one more substrate, that is uh, डिग्री वाला. डिग्री का और बेसिकली एक छोटी सी टेबल, एक्वस KOH या एक्वस NOH लेते हैं और एक्वस NOH NaOH
versus alcoholic KOH or alcoholic NaOH. So what differences do we have? So in this case, bases present are bases present. It is OH minus, RO minus and OH minus. Stronger bases यहाँ पर एक ही प्रेजेंट है, यहाँ पर दो प्रेजेंट हैं, तो RO माइनस इज स्ट्रॉन्गर. जनरली हायर कंसेंट्रेशन में कौन रहेगा? हायर कंसेंट्रेशन यहाँ पर OH माइनस ही रहेगा और यहाँ पर अल्कोहलिक KOH में भी OH माइनस ही हायर कंसेंट्रेशन में रहता है. This becoming more stronger in terms of the strength becomes the one which pulls the reaction. ठीक है. RO minus तो present in smaller quantity but being a stronger base it is more reactive than OH minus and hence gives major role. Okay. एक चीज और छोटी सी, जैसे ये वाला एंटिटी है ना, डबल बॉन्ड Br, ये क्या है? स्पेशल स्ट्रक्चर है जहां पर एक्सटेंसिव रेजोनेंस है. ये वाली चीज जो होती है ना, दिस हैपेंस टू गिव एलिमिनेशन विद थिंग्स लाइक नॉर्मल H2O लेंगे, दिस इज गोइंग टू गिव मी Sn. यहाँ पर नॉर्मल बेसिस भी अगर हमारे रहते हैं ना, दैट इज OH माइनस विथ डेल्टा तो डेफिनेटली एलिमिनेशन देता है. नॉर्मल बेसिस भी एक एक्सटेंट तक एलिमिनेशन. सो यहाँ पर OH माइनस और Sn और E देने लगता है. OH माइनस पूरी तरह से, OH माइनस डेल्टा पूरी तरह से इसको एलिमिनेशन बना देता है और उसके ऊपर वाले तो नॉर्मल कंडीशन में ही इसको एलिमिनेशन बना देंगे. इज दैट ओके?
MEO माइनस एलिमिनेशन, और बाकी सारे एलिमिनेशन ही देंगे। LDA, ETO माइनस MEO और ETO दोनों ही एलिमिनेशन देगा। तो DO माइनस LDA, बाकी सब तो एलिमिनेशन देंगे। Now we are going to talk about 2 minutes. Now try to discuss about the different possible mechanisms. Sorry, ये नहीं लिखा है। नहीं, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। ओके, सॉरी। अभी दिख रहा है। So the first mechanism is going to be even mechanism, even elimination mechanism. Even elimination mechanism में what happens is so the very first point is uh, reaction steps. Reaction steps, they look something like this. Yeah, the reaction is overall, first of all, R CHBr or maybe CHX with CH3 in presence of OH minus delta over here, mu minus delta. Mu minus delta is equal to R CH double bond CH2 plus H plus and plus Br minus.
the steps are, this reaction is for two-step is multi-step complex reaction with two transition states TS1 and TS2 and one intermediate in form of carbocation. The steps are steps of reaction are step 1 are CH, CH, ER. So we have slow separation of slow separation of PR leading to 2-degree carbocation formation plus Br minus. Then in step 2, we have proton extraction and we have this happens to be a fast thing and we have formation of RCH double bond CH. Basically ये H plus जो है that is extracted by NO minus. So NO minus gives electron to this gives electron to the vacant orbital and we have formation of pi. The rate of reaction is given as the constant into substrate only the rate law
So just it to be a unimolecular molecular mechanism in which step 1 is of RDS. The reaction profile कैसा होगा? What I am going to form is an alkene, right? This is the product. Is that okay? Reactant, यहाँ पर energy, reaction, coordinate. Any problem? This is going to be TS2. This is going to be TS1. ये हमारा intermediate so TS1 then TS2 and obviously intermediate. They are going to be intermediate is going to look like cation है simple सा right R CH plus CH3 intermediates कैसे sorry transition states कैसे दिखेंगे R CH PR ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस CH3 that will be first transition state. Is that okay? Then we have second transition state where we have R CH single bond or still double bond getting formed CH2 and H is leaving. ठीक है ये डेल्टा प्लस डेवलप कर रहा है और इधर डेल्टा माइनस होगा which is going to fill up this. So यहाँ पर भी एक डेल्टा प्लस रहेगा. Is that okay? And ये थोड़ा और extended system हो सकता है if we consider the bonding with MeOH. ठीक है वो Me के साथ की bonding भी consider करेंगे. So this delta plus is going to be neglected and here we will have delta minus formation. Am I making sense? Basically यहाँ पर जो डेल्टा प्लस डेवलप हो रहा था इस बॉन्डिंग की वजह से न्यूट्रलाइज हो रहा है. यहाँ पर जो फुल नेगेटिव चार्ज था दैट इज बिकमिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है
यहाँ पे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। So from this we can make that TS1, ठीक है, TS1 will have higher potential energy than TS2. The charges are far separated. Charges are pretty closer, opposite charges. Therefore, energy of TS2, sorry, the energy of TS1 is going to be greater than energy of TS2. That implies EA1 will be greater than EA2. That implies step 1 is RDS. TS1 is developing the dynamic character. There is something called as isotopic effect. Isotopic effect क्या होता है? Isotopic, सपोज जो हाइड्रोजन है डिपार्ट कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, उस हाइड्रोजन को मैं ड्यूट्रियम से रिप्लेस कर दूं, प्रोटियम को ड्यूट्रियम से रिप्लेस कर दूं, तो कार्बन ड्यूट्रियम का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन हाइड्रोजन से, ये हम लोग को पता है। Carbon deuterium bond is going to be stronger than carbon hydrogen bond. Is it okay? Hello. However, as step 2 is not a rate determining step, the potential energy of this TS2 is much lower than, or it is at least lower than TS1. Therefore, replacing H with D is not going to increase this significantly. It is going to increase it slightly. And with that slight increase, the first step is still going to have the dominant say as far as rate reaction is concerned. Am I making sense? In such case, as the rate of reaction is not directly involving the, or the rate determining step is not directly involving the carbon deuterium bond being broken, the effect of this on the activation energy is going to be there, but it will be very less. ठीक है, क्यों ज्यादा रहेगा नॉर्मल वाले हाइड्रोजन के कंपैरिजन में? क्योंकि इस पूरी एंटिटी का स्टेप 1 में क्या हो रहा है हमारा, ये दो चीजें डिटैच हो रही हैं, सॉरी स्टेप 1 में क्या हो रहा है, ये दो चीजें डिटैच हो रही हैं, राइट? मेकिंग सेंस? This entity is getting detached from this entity.
अब ऐसे में अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन के बदले एक ड्यूट्रियम लगाएंगे तो इसका मास थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सर आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, क्या बोल रहे हो? सॉरी। सर आप मुझे सुन पा रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या रिप्लाई करूँ? सर अभी आ रही है? अभी मैंने क्या बोला? नहीं सर, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। अभी आ रही थी, है, पहले नहीं आ रही थी, बट बहुत स्लो आ रही है। You guys getting this point? और ये क्यों रहेगा? क्योंकि इनर्शिया फैक्टर की वजह से, ठीक है, इनर्शिया फैक्टर की वजह से वाइब्रेशन सेम लेवल का क्रिएट करने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, आई नीड अ स्लाइटली ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। सेम लेवल का इनर्शिया फैक्टर अटेन करने के लिए, सेम लेवल का वाइब्रेशन अटेंड करने के लिए, बिकॉज ऑफ हायर इनर्शिया और हायर मास, we have to have greater energy. Is that okay? But that won't be significantly higher, it will be very slightly higher. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ बट सर, ये समझ। बट मान लो ये वाला आरडीएस होता और इसी बॉन्ड को ब्रेक करना होता, तो इस सिनारियो में अगर H को D से रिप्लेस करते हैं तो द इफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी वुड हैव बीन लार्जर, क्योंकि डायरेक्टली जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसी को ब्रेक करना है। यानी पहले के कंपैरिजन में ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा डी अगर रहेगा तो, एंड इन सच सिनेरियो द ब्रेकिंग ऑफ सी एंड डी बॉन्ड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन सी एच बॉन्ड। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत सिग्निफिकेंट भी नहीं होता है, स्लाइट ही होता है। 4-6 किलो कैलोरी का डिफरेंस रहता है, सॉरी 2-4 किलो कैलोरी का डिफरेंस रहता है। 4-6 नहीं, 2 से 4 किलो कैलोरी का डिफरेंस रहता है। पर यहां पर जो इफेक्ट रहेगा बी आर और सी के बॉन्ड के ब्रेकिंग में बिकॉज ऑफ डी, उसमें डिफरेंस और भी कम होगा। इट विल बी क्लोज टू 0.5 किलो कैलोरी डिफरेंस और इवन लेसर, क्योंकि यहां पर सिर्फ मास के फॉर्म में काम कर रहा है, यहां पर एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर ये आरडीएस होता तो, अभी फिलहाल नहीं है तो हमारे लिए टेंशन नहीं है। तो दिस इफेक्ट ऑफ डी टू इनहांस, सॉरी टू रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन, जहां पर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, द बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस ऑफ कार्बन ड्यूट्रियम इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसे सिनेरियो में ड्यूट्रियम का प्लेसमेंट ऑन कार्बन रिप्लेसिंग अ हाइड्रोजन, जो इफेक्ट होता है बहुत स्मॉलर होता है, एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आइसोटोपिक इफेक्ट is secondary secondary in nature. Rate constant with H and rate constant with D is very lightly,
very lightly greater. Next thing is, सी यहाँ पर कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है इंटरमीडिएट में, ठीक है। और कटायन के फॉर्मेशन के बाद H प्लस का लॉस हो रहा है इसके साथ। अब सॉल्वेंट में अगर प्रोटॉन वगैरह अवेलेबल भी होगा, ठीक है, या ड्यूट्रियम अवेलेबल है, राइट, तो H का रिप्लेसमेंट बेसिकली जो होता है, H का रिप्लेसमेंट, दिस H, the H of substrate is not going to get exchanged with deuterium. Generally even में ये चीज होता है, we are going to see that. So we can say that there is no deuterium exchange with, सॉरी, E1 में नहीं हो रहा है, E2 में भी नहीं होता है, that happens in E1 CB. No deuterium exchange with solvent. और वो क्यों होता है? इवन सीबी में बेसिकली कॉन्जुगेट बेस पर से एल माइनस लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन होता है, पहले H प्लस निकल जाता है, तो H प्लस निकल गया, कटायन का अनायन का फॉर्मेशन हो गया, तो नाउ अनायन कैन एक्सट्रैक्ट अ प्रोटॉन और D प्लस इफ अवेलेबल इन द सॉल्वेंट, और वो कैपेबल होता है। बाकी दोनों जो होते हैं उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती है, पहले वाले में तो बिल्कुल A2 वाले में भी नहीं होगी और E1 वाले में भी नहीं। E2 E1 के रेस्पेक्ट में reactivity order with respect to substrate, मतलब halide or alcohol being used, we have 3 degree going to be most stable, 3 degree सबसे ज्यादा stable कार्बोकटायन प्रोड्यूस करेगा, right? So 3 degree will be greater than 2 degree, will be greater than 1 degree, and methyl तो करेगा ही नहीं। So reactivity order with respect to substrate is 3 degree, 2 degree, 1 degree, and this is because of energy of carbocation is lower, implies ये being lower implies a rate being higher. Reactivity with respect to living group,
ठीक है, इसमें RF is going to be slowest, followed by RCl, followed by RBr, followed by RI. बेसिकली बॉन्ड एनर्जी जितना कम रहेगा और उतना जल्दी ब्रेक करेगा, या लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जिसका ज्यादा है वो ज्यादा फास्ट लिव करेगा. वी नो दैट F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस इसी ऑर्डर में लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होती है, एंड देयरफॉर रिएक्टिविटी इज आल्सो गोइंग टू फॉलो द सेम रूल. इज दैट ओके? हेलो. यस. हाँ सर. यस. Generally, a relatively weak base, not absolute weak base. A relatively weak and dilute base favors even mechanism so that the base can attack the substrate only after formation of carbocation. A rearrangement is possible because of carbocation intermediate या आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं. I'll discuss the next few points of this in the next. सर. हाँ बोलो. सर एक बार खाली बता दो ना कि जीओसी और ये अब तक